rainbow. Yes, it's very beautiful. In fact, the legends of many cultures see the rainbow as a kind of bridge between heaven and earth. Really? Well, that's an interesting idea. But science has figured out the secret of rainbows. I can reproduce a rainbow for you using a triangular prism. Oh, how does that happen? Well, the same phenomenon takes place in both cases. Refraction of light. In this lesson, you will learn about dispersion and scattering of light. At the end of this lesson, you will be able to identify the general terms associated with a triangular glass prism, demonstrate refraction of light through a triangular glass prism, demonstrate the dispersion of white light by a glass prism, explain atmospheric refraction through twinkling of stars, apparent sunrise and sunset, explain through the concept of the scattering of light, the Tyndall effect, and reddening of the sun at sunrise and sunset. You said you could show me a rainbow through a prism. What exactly is a prism? Is a triangular glass prism a special kind of a prism? A triangular glass prism, to be specific, is a piece of glass that has 2 triangular and 3 rectangular faces. Prism, a special kind of a prism? अब यहाँ पर ये देखो, ये प्रिज्म है जहां पर डिस्पर्जन होता है. डिस्पर्जन मींस जब एक व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोलते हैं. तो ये जो प्रिज्म होता है, इसमें देखो एक ये वाला फेस और एक ये पीछे वाला फेस, ये 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और ये रेक्टेंगुलर, इधर नीचे बेस पे रेक्टेंगुलर, और ये वाला फेस 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जहां पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों होता है. A triangular glass prism, to be specific, is a piece of glass that has 2 triangular and तो ये डेफिनेशन आ जाती है प्रिज्म की, कि जो ग्लास का पीस यहाँ पर हम क्या लेंगे, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, आप यू कैन टेक आइदर ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 2 triangular and 3 rectangular faces. 3 rectangular faces. You may have studied how light refracts through a glass slab. You can think of a prism as a triangular piece of glass carved from a white-bottom glass slab. Let's see how light refracts when the glass slab is converted to a prism. Consider ABCD, the cross-section of a glass slab of a certain thickness. A ray of light is incident on the face of the slab, represented by AB. This incident ray refracts through the path shown. After refraction through the 2 surfaces, the ray emerges from the face of the slab represented by DC. अब ये आपको ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट याद होगा. देखो ये रेयर मीडियम है, बाहर एयर, और ये ग्लास डेंसर मीडियम. लाइट रेयर से डेंसर में मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से जब रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है. The surfaces of the slab represented by AB and CD are parallel. Hence, the emergent ray is parallel to the incident ray. We truncate the surface of the slab represented by CD so that the cross-section now forms a trapezium as shown. As you can see, now the emergent ray is not parallel to the incident ray anymore. As we continue truncating the slab, the direction of the emergent ray keeps changing as shown. तो जैसे जैसे आप ये वाला एंगल चेंज करते जाओगे, आप क्या देख रहे हो, जो एमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. तो डिस्पर्जन में एक्चुअली यही होता है. Finally, we get a shape with 3 rectangular surfaces and 2 triangular faces. We refer to this as a triangular prism. Wow! I can see
how the emergent ray is emerging at a different angle altogether now. Yes, the shape of the prism impacts the way the incident ray refracts. The formation of a rainbow is a combined effect of refraction and another phenomenon called dispersion. तो ये जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है ये कंबाइंड इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है उसमें एंड डिस्पर्जन भी हो रहा है. रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे बेंड हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उनका एंगल चेंज होता है. एंड जो डिस्पर्जन हो गया वो स्प्लिटिंग हो गई. व्हाइट रे जो है यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिस्पर्जन हो रही है. व्हाइट रे डिफरेंट 7 कलर्स की लाइट्स में स्प्लिट हो रही है, टूट रही है. Let's begin with refraction and review the general terms associated with the triangular glass prism. The rectangular faces in a triangular glass prism are known as refracting surfaces. ये जो आपके दो रेक्टेंगुलर फेसेस दिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन इसी पे फेसेस पर होंगी, इन्हीं दोनों फेसेस पर. यहाँ पर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, इस ग्लास स्लैब से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. और फिर अगेन यहाँ देखो डेंसर है और इधर बाहर रेयरर, तो डेंसर से जब रेयरर में आएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी. The line along which the two refracting surfaces meet is known as the refracting edge of the prism. The angle between the two refracting surfaces, denoted by the capital letter A, is called the angle of the prism or the refracting angle. अब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो थे उनके बीच का जो एंगल होता है इसको A से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म. The base of the prism is the rectangular face of the prism that does not take part in refracting light. Consider XYZ, the cross-section of a triangular glass prism. When a light ray PQ is incident on the face XY of the prism, it refracts at the two refracting surfaces of this prism and follows the path PQRS as shown. अब यहाँ पर सिर्फ आपके जो सिलेबस में है वो रे डायग्राम्स है, तो जैसे इसमें रे डायग्राम्स बताते जा रहे हैं आपको नोट डाउन करना है. यहाँ पर लाइट एंटर की, बाहर क्या था, रेयरर मीडियम और अंदर डेंसर मीडियम. Now, a quick recap of the terms associated with refraction. The ray of light that is incident on a surface is called an incident ray. Therefore, PQ is the incident ray. Q is the point of incidence. The ray that deviates at the point of incidence due to a change in the medium is the refracted ray. In this case, the refracted ray is the ray that travels inside the prism between the two refracting surfaces. Thus, QR is the refracted ray. The refracted ray again incidents on the other surface of the prism and then emerges from it into the air. This light ray emerging from the prism after refraction is called the emergent ray. Here, RS is the emergent ray. Normal is the imaginary line drawn perpendicular to the surface at the point of incidence. The angle formed between the incident ray and the normal at the point of incidence is known as the angle of incidence. Thus, here angle I1 is the angle of incidence on the face represented by XY. Similarly, angle R2 is the angle of incidence on the face represented by XZ. The angle between the normal and the refracted ray is known as the angle of refraction. In the absence of the glass prism, the incident light ray would follow the path PQOQ. अब यहाँ पर देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी और यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी. इस केस में ये इंसिडेंट रे है, लाइट यहाँ से क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में पास हो रही. देखो ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल रे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. ब्लू लाइन इज क्या है, रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ तक आई
अब यहाँ से उसको डेंसर से रेयर में मीडियम में जाना है, ये नॉर्मल बनी यहाँ पर इस सरफेस पे, और देखो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब अगर ये ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं होता तो ये लाइट यहाँ बेंड ना होकर के कैसे जाती, ऐसे सीधे जाती। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस सरफेस पर भी अगर ये सरफेस ना होता रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो लाइट ऐसे बेंड ना होकर के कैसे जाती, ऐसे सीधे जाती। अब ये जहां पर एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किस एंगल से ये एक्चुअली इसको सीधे जाना था पर वैसे ना जाकर के वो डेविएट हो गई अपने पाथ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। Dash. Due to the prism, the light ray emerges along the path ORS. Thus, the light ray deviates from its initial path. The angle between the directions of the incident ray and that of the emergent ray is called the angle of deviation. तो ये आपकी एमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे। एक्चुअली उसका पाथ क्या था, सीधे जाना, पर वो क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। ये एमर्जेंट रे, ठीक है, सीधे ना जाकर के वो कैसे हो गई, बेंड हो गई। तो ये जो एंगल, दिस इज, ये रेड लाइन आप जो देख रहे हो, दिस इज एमर्जेंट रे, इसी को हमने पीछे एक्सटेंड किया है। तो एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे के बीच में ये जो आप एंगल देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा, ये जो साइन आप देख रहे हो, इस साइन को हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये इसको, ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम साइन यूज करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लोगे एंगल ऑफ डेविएशन की, angle between the directions of incident ray and that of emergent ray is angle of deviation. And is represented by Greek letter delta or theta d or the English letter d. Here, angle Q-OR is the angle of deviation. When the light ray PQ incidents at Q on the face XY of the cross-section XYZ of the prism, it refracts and propagates forward inside the prism. As the light ray passes from a rarer medium, which is air, to a denser medium, which is glass, it bends towards the normal. When this refracted ray incidents on the other face of the prism XZ at R, it refracts again and becomes the emergent ray RS. Here, the light ray refracts from a denser medium, which is glass, to a rarer medium, which is air. Hence, the light ray bends away from the normal. Thus, a light ray refracts twice as it propagates through a triangular glass prism. The emergent ray always propagates towards the base of the prism. Okay, that was half the picture. What about dispersion? To understand dispersion, let's look at some videos of our annual day celebrations. I remember the amazing lighting. I wonder how they got those effects. Actually, prisms were used for those effects as well. That's where dispersion of light comes in. Light rays refracted through a prism disperse and give rise to very vibrant colors. Where do these colors come from? You'd be surprised to know that these are all constituents of white light. When a white light ray passes through a prism, it refracts and splits into its constituent colors in the process of refracting through the prism.
The splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब लाइट रे एंटर करती है प्रिज्म से तो उसको दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलते हैं. तो यहाँ पर ये जो लाइट रे पास कर रही है प्रिज्म से वो रिफ्रैक्ट भी होगी और स्प्लिट हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, मींस जिन कलर से वो मिलकर के बनी है इन्हीं दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में. तो ये जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट का इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और ये डेफिनेशन आप लोगों को नोट करनी है. This is how you get the rainbow effect through the prism as well. Light disperses and creates a rainbow effect when it propagates and refracts in a prism. Let's conduct an experiment to see how we can create this rainbow effect through a prism. For this experiment, we take a prism on a horizontal surface as shown. On one side of the prism, we place a source of white light. Between the light source and the prism, we place a cardboard having a pinhole. This helps in producing a very narrow light beam through it. तो अभी हमने ये कार्डबोर्ड और ये पिन होल क्यों किया इसमें, क्योंकि अब ये जो लाइट रेज स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, यहाँ पर हमें एक ये क्या दिख जाएगी, एक स्ट्रीक दिख जाएगी लाइट रे की इस तरह से. तभी हमें ये डिस्पर्जन वाला प्रोसेस जो है वो क्लियरली विजिबल होगा. तो अभी यहाँ पर ये नैरो एक लाइन व्हाइट लाइट की फॉर्म करने के लिए वी हैव प्लेस्ड अ कार्डबोर्ड इन बिटवीन दिस प्रिज्म एंड द सोर्स ऑफ लाइट. Similar to that of a ray. Finally, on the other side of the prism, we place a white paper as shown to catch the dispersed emergent beams. This white paper acts as a screen. Can you see that strip of colors? Let's check out the order in which these colors appear from bottom to top. First is violet. Second is indigo. Next is blue, then green, yellow, orange, and lastly red. The same colors as that in a rainbow, right? और ये ऑर्डर याद करने के लिए आप याद कर लो विबग्योर, VIBGYOR, इसके इनके सबके जो इनिशियल लेटर्स हैं, स्टार्टिंग लेटर्स हैं, विबग्योर. Yes, I see what you mean by creating a rainbow through a prism now. To Iranian Muslims, even the brilliance of the colors in a rainbow is significant. For example, prominent green means abundance, red means war, and yellow brings death. Note, the order of colors in a rainbow is popularly identified using the acronym WIBGYOR, each letter standing for a color in order. The same order of colors is visible in a rainbow. But a rainbow has bands of colors. Ah, don't worry. We can create bands too. Suppose you replace the cardboard having a small pinhole with the cardboard having a horizontal slit. जितना आप ये लाइट की के लिए स्पेस बढ़ा देंगे उतना ज्यादा यहाँ पर ब्रॉडर रेनबो फॉर्म होगा. अभी ये अगर पिन होल था तो आपने एक स्ट्रीक देखी लाइट की यहाँ पर, अभी ये बढ़ा देते हैं तो आप देखिएगा कैसे यहाँ पर जो रेनबो की जो फॉर्मेशन होगी वहां पर थोड़ा सा ब्रॉडर रेनबो फॉर्म होगा. That is an extended light source. The vertical strip of colors you just saw expands to bring out bands of colors similar to a rainbow. There! Doesn't that look like a tiny rainbow? So it does. Auditorium stages are also fitted with hidden rotating prisms that give exciting visual effects to support the performances on the stage. In stage lighting, several light beams are passed through rotating prisms to create spectacular effects. But why do these colors
gets separated when passed through the prism? When white light propagates through a prism, it refracts at an angle. However, the angle of refraction of each of constituent colors of light varies a little. अब ये देखो हर एक कलर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये 7 डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो रहे हैं. अगर हम यहाँ से वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करें तो ये जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और इसका अपोजिट फ्रीक्वेंसी होती है. वॉयलेट कलर की अगर वेवलेंथ सबसे मिनिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, and the wavelength of red color is maximum, so its frequency is minimum. This is because the frequency and hence the wavelength of each of the constituent colors of white light is different. This leads to a difference in the refractive index of the glass for each of the colors. The difference in refractive index leads to different angles of deviation for each of the colors when light is passed through the prism. This is how we obtain a band of different colors on the screen. But there is no prism in the atmosphere. So where does the rainbow come from? I was just coming to that. Let's now solve the mystery of the rainbow. As it happens, we do have something like prisms in nature. On a sunny day, when the rainfall has just stopped, some raindrops remain suspended in the air. These drops act like refracting media, like prisms, for the sunlight. When sunlight incidents on these raindrops, it gets refracted and disperses to reveal its constituent colors. अब नेचर में रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब ये देखिए. जैसे कब होता है, जब जस्ट सनलाइट भी होती है और रेन भी होती है, उसी टाइम पर रेनबो की फॉर्मेशन होती है. रेन जस्ट स्टॉप होने के बाद में अभी एटमॉस्फेयर में ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बची रह जाती हैं. तो जब सनलाइट ये पास होती है वाटर की ड्रॉपलेट से, तो यहाँ पर ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं ये प्रिज्म का काम कर रही हैं. और ये देखिए, ये देयर आर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हियर. तो यहाँ से सनलाइट पास हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से भी पास हुई, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन दोनों चीजें हो गई. तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये रेनबो की फॉर्मेशन हो गई. Thus, you can explain the formation of a rainbow through the concept of the dispersion of light. The refraction of light leads to a number of other phenomena that you see daily. Remember the rhyme about the twinkling stars from your childhood? अब इसके बाद में डिस्पर्जन वाला पार्ट कंप्लीट होता है और फिर अब आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और इसमें एक एक जो प्रोसेस है आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर अब रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसमें.